cell cycle and cell division law last class. It is also called equational or homotypical division because the number of chromosomes remains same as after meiosis 1. meiosis 1 ପରେ meiosis ଆମର ନା meiosis 1 ଲେ 2 haploid 2n ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବାଲା ବାହାର ତେଣୁ meiosis 1 ରେ ବାହାରି ଥିବା କ୍ରୋମୋଜୋମ 2 haploid देन से कुछ तापर जो डिवीजन हबो से डिवीजन ले कौन हबो ना क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम मींस हे हाप्लॉइड ही रहिबो हाप्लॉइड ए हाप्लॉइड क्रोमोजोम ही देखिबा को मिलुची इट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन देन इवन typical mitotic division. It also divided in two parts, karyokinesis and cytokinesis. ଏବେ ଦେଖିବା karyokinesis to nuclear division. It involves the separation of two sister chromatid of each chromosome and their movement to separate cell. ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ସେପାରେସନ ହବ karyokinesis 4 phase କୁ ନେଇ ଗଠିତ प्रथम फेज ହେଲା प्रोफेज disappearance of nuclear membrane and nucleus एथरे कोन हबो प्रोफेज रे ना न्यूक्लियस रो डिसअपियरेंस हेबा स्टार्ट कोन लिखुची ना कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन फाइबर्स इनटू डेफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोजोम रो कोन हबो कंडेंसेशन हबो फॉर्मेशन ऑफ आस्टर फॉर द सेंट्रियोल एथरे कोन फॉर्मेशन हबो ना आस्टर रे स्पिंडल फाइबर माने फॉर्मेशन हेबे each chromosome is formed of two sister chromatids joined at the centromere sister chromatid माने centromere रे joint हेबे हमें जानि जे एदिरा होची sister chromatid जो जगह joint हेबे ता ना हला centromere एबे देखिबा मेटाफेज रे कोन हबो ना क्रोमोजोम मानकर अलाइनमेंट हबो इक्वेटर लाइन रे आ स्पिंडल फाइबर माने आसिकी जॉइन करिवे ए जो प्लेट जो लाइन ले अलाइनमेंट हेबे ताको कहा जिवो मेटाफेज प्लेट बा इक्वेटर लाइन ईच सेंट्रोमियर हैज जॉइंड बाय टू क्रोमोसोमल फाइबर दुईटी क्रोमोसोमल फाइबर प्रति सेंट्रोमियर रे जॉइंट हबो टू क्रोमोसोमल फाइबर जॉइंट एट द काइनेटोकोर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन वन इक्वेटोरियल प्लेट अरेंजमेंट हबे इक्वेटोरियल प्लेट देखिबा एनाफेज 2 एनाफेज रे कोन हबो ना सेपरेशन हेबे क्रोमोसोम रो सिस्टर क्रोमाटिड माने सेपरेशन हेबे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर और न्यू क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड माने सेपरेशन हे कि दुईटी नवा क्रोमोसोम रे डिवीजन हबो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जोनल फाइबर इथरे कोन डेवलपमेंट हबो इंटरनल जोनल फाइबर रो डेवलपमेंट हबो बे देखिबा टेलोफेज रे कोन हबो ना साइटोप्लाज्म रो सेपरेशन स्टार्ट हि जिवो एवं न्यूक्लियस जो डिसअपियर हितला ता पुनी अपियर हेबा स्टार्ट करि दबो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट involves changes opposite to the prophase रो opposite होची telophase formation of a daughter nucleus at each pole due to the appearance of nuclear membrane and nuclear membrane and nuclear कोन हबो appearance हबो disappearance of aster and spindle fiber एमान सब स्पिंडल फाइबर आस्टर सेंट्रियोल्स माने कोन हेबे डिसअपियर हेबा स्टार्ट करते एबे देखिबा साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एथरे कोन हबो ना 4 हाप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हबो मेयोसिस 1 रे कोन फॉर्मेशन होबे ना 2 हाप्लॉइड सेल मेयोसिस 2 रे कोन फॉर्मेशन होबो ना 4 हाप्लॉइड सेल इट इज ऑलवेज प्रेजेंट and occurs by the cell formations in animal cells and cell plate in plant cell. Meiosis significance it produce haploid gametes or spore a haploid gametes so formation karibo it also causes multiplication as the meiosis each diploid parent cell produce 4 haploid cell
प्रति डिप्लॉयड पेरेंट सेल कौन प्रोड्यूस करेंगे ना हाप्लॉयड सेल रे meiosis produce new combination of genes due to crossing over and chance arrangement of bivalent at equator producing genetic varieties which helps evolution and improvement of races ई मेयोसिस होउथिबारु हमकु न्यू इवोल्यूशन बा इंप्रूवमेंट ऑफ जीन रा देखिबा को मिलुची It proves interrelationship between living organisms because its details are basically similar. Chromosomal and genomic mutation caused by non-disjunctional etc. are source of useful variations. यह थिला meiosis टूर पूरा डिटेल्स जदि आपनको भिडियोटी को भल लगी ताले भिडियोटी को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं कोन किछि डाउट थिले कमेंट रे लेखंतु जदि नोट्स पाइबा को चाहुचंदी ताले चैनल टी को जॉइन करंतु एवं सेतरे नोट्स सब प्रोवाइड करा जाउछि।